Hello dosto, welcome to UPSC Essential Simplified. Today we have a very special guest with us. He secured rank 5 in Jammu and Kashmir Combined Competitive Examination, also called as KAS examination. He did his schooling from DPS Atwajan. After that, he did his BTech in Civil Engineering from IUST. Hello Moin sir, how are you? I'm good, sir. How are you? Yeah, I'm good, sir. Sir, tell us something about your journey, sir. When did you first realize that you can become an officer or you should go to public services? Basically, it was back in my school days only that I had this thing that I would go for civil services, but it wasn't that as such. I had decided about the syllabus, I had decided about the subjects or such things, but it basically was a goal. It was an aim that I had. So every time, whenever people ask me that what is very important to secure good marks or secure this, I think more than that, I tell those people that it's very important to have a goal first, rather than having these things in mind, that how to secure a rank, how to secure good marks. So it's very important to have a goal. So I had this goal from the very childhood days of mine. Okay, so that's why we started it with that only. Setting goals is the first step in the journey. The invisible into the visible. जिससे आप invisible को visible में Yes. convert करोगे. So being an engineer, it becomes a default choice for a lot of engineers to come into the civil services. We have seen in the UPSC also, we are seeing in the JKPSC also. So how do you navigate that process? I basically think that it's not that engineers usually come to this process. It is so because we don't have too much of opportunities left today in these days, as many of the people try to get into government jobs or something like that. But the opportunities are very less now because a lot of people do these engineering and all the other stuff. The people graduate in many professional streams nowadays. So but what I do think is that if people have this thing in mind that they want to go for it, even there are many people in our batch who are from medical science, they are MBBS, they have done their MBBS as well. So it's all about your interest and how much you can put in, how much of hard work you can put in to secure good marks in this exam and to crack whatever you want to crack in life. Okay, we'll start with your strategy from paper wise. Let's first go to essay paper. So what did you did for that essay paper? How you prepared that essay paper? So what I would tell you is that the essay paper, what I thought is all about GS and all the things that you have read, so you can use those things in essay. For example, I think the ethics preparation, that was very handy when it came to essay. So I used my ethics things, that whatever I had prepared for my ethics, I used those things in essays. For example, I can tell you that I used many quotes that I had prepared for ethics in my essay paper. Also, the things, the examples, the data, the facts, the set of content I had prepared for GS was also very helpful when it came to essay. Be it the political part, be it the economic part, be it any aspect, be it any dynamic aspect also of the topic asked, I was able to address that. Like I was able to address that fully. So the mood question remains with the aspirants. A lot of aspirants have different styles while talking to different toppers. They also have their different style of writing also. So how do you navigate one thing, that anecdote wala part, and the second thing is the conclusion part? Sometimes the essay will come wherein you have to be critical, but again in that criticality, if you are giving some light, so how far is that process important? So this is a good question, sir. That when I started my preparation, when I was looking at the essays, the previous year ones, so I also had this thing in mind that how do people do this? So when I came to the crux of this thing, the answer of this thing, I basically got this point that whenever you have an essay, I can give you an example of it. Just say there's an essay, don't do onto others what you want to be done by. Okay, this is an essay that can be asked. You have to write an essay on it. You have to write 12 pages on it, around 1200 words. So ऐसे तो सोचने में लगता है कि topic, okay, I can write some 1-2 pages. But when you have to think about this topic and you have to write 12 pages, so you cannot start writing at the very first moment. So that is one of the key things that I have learned when it comes to essay preparation. So you just have to first, for the very first 10-12 minutes, you have to frame a structure for your essay and frame
the sort of things that you have in your mind regarding the topic, that you have to frame in a laddered manner, like what would I write first, then second, then third. Now starting with this thing, that how would you tackle this anecdote part. Usually what I did was I started my essays with examples and also ended my essays with examples. So what example does is, for example, we have this one that I told you about, don't do unto others what you want to be done by. So this basically means, if we say कि दूसरों के साथ भी वैसा नहीं करो जो तुम खुद के साथ नहीं होने, like you don't want दूसरे तुम्हारे साथ करे. So if you have any example from your own life, और हुआ होता है ऐसा, you definitely know that there are instances in life. So I just quoted them in the very first start of that essay. So what impression that creates in the mind of examiner is that this person basically understands what the topic is all about. So at the very first, it makes an impression that you just have understood the topic, you just have understood the question what has been asked. So that is one of the key things in essays, like anecdotal essays. Now if there's an essay, for example, say on global warming, so even if you don't start with an example, it would be better that you start with example that which would focus on the impact, that why is it a big concern for us. Even if you do start, still it would be okay. But for those type of ethical essays, or for those type of essays which are too I would say anecdotal, so for those I think starting and ending with examples is a very good choice. But you have to even think of those examples. It's not that you would write anything. You have to have a very good example. So that definitely creates an impact. So now my follow-up question to that is, there is a finer line, a blur line. Writing an essay, good essay, people usually call it like it should be a salad bowl. Then again, there are some aspirants who give so much facts, they became like too much fact show. तो कहीं ना कहीं when I talk to aspirants, they say कि हमने तो ऐसे बहुत अच्छा लिखा था, I was expecting at least 120 plus score, लेकिन जब मार्कशीट आता है तो they are having in the range of like 80 to 90. वो जो फाइन ब्लर लाइन है somewhere, उसको आप कैसे देखते हो? Sir, my answer to this question of yours would be, when we write, for example, there's some essay. I know a lot of things about that. But what happens to us is, out of those 12 pages, when we come to the body of the essay, like there's introduction, there's body, and there's conclusion of the essay. When we come to the body of the essay, what I have seen most of the people do is, जो वाला part उनको सबसे अच्छा आता है. For example, they know political aspect of that thing very well. They just write multiple things in that political aspect. But there comes the other person जिसने पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, एथिकल एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट, वो सारा कवर किया होता है बाकी की बॉडी में 8 पेजेस पे. तो डेफिनेटली ही वुड स्कोर बेटर देन दिस मैन, इवन दो जिसने पॉलिटिकल एस्पेक्ट बहुत ही डिटेल में लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, कोट्स दे के लिखा है, एनेक्डोट्स दे के लिखा है, एग्जांपल्स दे के लिखा है, लेकिन ही हैज जस्ट टच्ड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द essay. So what I have seen in this exam, like I have scored a good this rank, so maybe my marks would also be. Yeah, definitely. So, yeah. But that out of my own papers that I remember what I had written, I just tried to touch each and every sphere of life in my essays. Like I can tell you the topic, so just whatever it was, I just tried. I would write some things with the help of examples, some environmental, some ethical, some legal, some technological. There was a wholesome approach. I used all my GS thing in my essay, be it any subject. Even there can be a case of disaster management you can use in your essay. An example from internal security you can use in your essay. An example from social justice you can use in your essay. So this was one of the aspects that I scored good, I maybe because of these things. Okay, so before examination, you practice some essays, you gave to some evaluator, let the evaluator give some feedback, or it was like no, you did self introspection. आपने अपना ऐसे उठाया, उसको खुद से देखा या टॉपर के साथ मैच किया कि मैंने क्या सारे वो पॉइंट्स लिखे जो जरूरी थे. Sir, I would share this thing with you. So there was I thought that I would write a good essay out of myself. Like I have read GS, I have read ethics, so I'm writing, so I would just do it. But then what I did was I wrote one essay and I gave it to only one. I have written only one essay. So I gave it to some evaluator, and basically two evaluators. Okay, one from our state only. He was a KS officer. He is a KS officer rather, and the other to somebody out of the state. Like say, he's not from here. He's from Delhi or something.
So there was a huge difference in marks. One gave me, you won't believe, 180 out of 250 for those essays. There were two essays. Mhm. And the other gave me 107. So it was up to me now how, what sort of result would I accept. So obviously I accepted the result that was 107. So that Delhi person gave me that thing, that Delhi evaluator. So उसमें मुझे फिर ये पता चला कि yes, there were some aspects that I wasn't touching, or there were some things in my structure that Mhm. weren't right. So I worked on those things in the mains exam. Then when I wrote an essay in the mains exam, the real seat essay, so I worked on those things. So yes, answer writing becomes very, 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 very important for this exam, because you ultimately come to know that what are the problems with your writing, that you as such you think that you're writing very good. Mhm. There is everything that you are touching, but when it comes to some people who have already done this thing, when you show Mhm. your own answer copies, those people, they get these things, that what you lack in your answers, in your essays. So that was one of the things that I had this experience of writing an essay, and I got two different scores for the same essay. Then I accepted the lower score because I knew there were some problems in this, even though content was good, but Mhm. structure is also very important. So those were the things. Absolutely. In essay, we have to understand that the evaluators are senior professors from some university. They have in-depth knowledge about multi-dimensions. They are well versed with day-to-day happenings also. So having a balanced essay is very important. And plus having a very good conclusion, as you said, is very, very important, because it should not give that sad picture also to the evaluator कि वो जब शाम को टेबल पे बैठेगा फैमिली के साथ खाना खाने के लिए, उसको वो सैड पिक्चर नहीं आने चाहिए. एटलीस्ट ही शुड बी हैप्पी समर कि नहीं, मैं कुछ अच्छा पढ़ के आया. We will now move to GS1. We are going to talk about history, we are going to talk about geography, and we are going to talk about society. Separately three, because Yeah. our lot of young aspirants who have cleared the preliminary part in Jammu and Kashmir combined competitive examination, posts are less, but competition is high. So at least they should draw some guidance कि हम अब Yes, कैसे yes. करें, कम टाइम में ज्यादा चीजें कैसे बटोरें. तो जैसे आपने कहा कि GS1 को लेके, when you have these things, when people qualify prelims and they start preparing for GS1, मेरे हिसाब से तो most of the people don't even know कि subjects को segregate कैसे करें when it comes to Very mains. important. Mains में just ask anyone कि how many subjects are there in mains, syllabus में कितने subjects हैं, they don't know the exact numbers. They would start counting history, geography, art and culture, society, like this, but nobody knows the exact number. Why? Because basically हम segregate नहीं कर पा रहे होते. We take mains as a whole, but it's not as a whole. It answers में आपको connect करना है, लेकिन preparation के time पे आपको पहले अलग-अलग से पढ़ने पड़ेंगे. They are basically, mains is a house, और उसके different different rooms होते हैं. First floor is GS1. तो GS1 में you have 4 rooms. The first room is history. और history में यहाँ पे आपको segregate करना है कि prelims में there is no world history, but mains में you have world history as a subject. तो आपको पता होनी चाहिए कि के लिए important बन रहा है मेरा. Ancient तो है ही, medieval तो है ही, modern तो है ही, यहाँ पे mains में world भी आ जाएगा. Then you have geography. People think, okay, prelims में many a question, many a times questions come from human geography as well. तो mains में if you look at the previous year papers, तो physical geography से बहुत ज्यादा questions आते हैं. So there should be a focus. Mains में also not only a strategy, but a right strategy would work. ठीक है ना? तो if you prepare geography में भी some topics very, very well, definitely you would score good. So when it comes to the third subject, we have art and culture GS1 में. Again, prelims में art and culture का हम maybe there are two sort of preparations. One sort of preparation is this, that I know to solve an MCQ question, maybe I know 3 points, the fourth point I can guess. But in mains, you just have to write. You should be able to draw even the things that you have read. So mains is a wholesome preparation. Mains में if somebody asks you about Gupta Empire ki, what were the books, what was the literature of Gupta, you should be able to write that and even remember those tough names of those books. Prelims में even if you don't exactly remember the name, but आपके सामने जैसी वो paper पे आ जाएगा, maybe you are able to guess that correctly. But mains में that's not the case. So this is one of the things that बच्चे जो सोचते हैं कि pre हमने qualify किया, लेकिन mains में क्यों problem हुई, because असल exam is all mains. ठीक है ना? Prelims is just cut the clutter. When it comes to Indian society, this is again one of the parts, sir. जो बच्चे सोचते हैं out of 250 marks हम बस modern India पढ़ेंगे, राजीव गांधी पढ़ेंगे, शायद इतनी preparation या geography पढ़ेंगे इतनी, and papers
And 40% of the questions GS1 come from Indian society. 30 to 40% of the questions. So it is very very important to have a balance कि किस पेपर में से कितना आ रहा है और उसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी मेंस के लिए. प्रीलिम्स के टाइम पे people don't even study Indian society, but मेंस में this can secure your rank. तो you have to give it equal proportion. अगर आप हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया को इंपॉर्टेंट समझ रहे हो, मेरे लिए तो मॉडर्न इंडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंस के लिए इंडियन सोसाइटी था. व्हाई? बिकॉज प्रीलिम्स में मैंने मॉडर्न इंडिया पे एक होल्ड रखी थी, ठीक है, रिवाइज किया मेंस के लिए भी, लेकिन इंडियन सोसाइटी वाज समथिंग जिसमें प्रीलिम्स में आई वाजंट चेक्ड ऑन. इट वाज इन मेंस ओनली जहां पे मेरी इंडियन सोसाइटी की नॉलेज चेक की जाती, एंड दैट टू इन अ बिग मैनर जिसपे लिखना था. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं. आई कांग्रेचुलेट देम ऑल एंड आई जस्ट वांट टू टेल देम दैट जो मेंस में आपकी सेग्रीगेशन है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ समबडी इज रीडिंग ओनली GS1 और उसमें वो समझ रहा है कि GS1 इज ओनली हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, नो इट्स नॉट लाइक दैट. It is art and culture, it's Indian society, it's geography and history. And Indian society is a very big part of it. So you just read those things. Yes, sir. Now, again, you have touched very important things. Like, this is very important. This information is very crucial. Like, you have segregated things. That means you have given ample time to understand the syllabus, to understand the process also. And second thing is maybe, जो हम बता रहे, lot of aspirants says कि the ammunition, if you are going for a war, your syllabus and your papers are your ammunition. वो आपको साथ रखना ही पड़ेगा. Yes. You emphasize on a very good question, that is you have to first learn the syllabus also. By heart करना पड़ेगा syllabus को. Yes, yes, exactly. Then only If you maybe don't know the subjects that are coming in the paper, how would you able to answer those questions? How would you be able to answer those questions? That is the first point that we want to ask ourselves. So self introspection becomes very very important here in this exam. For me, I can give you an example of GS3. I thought, okay, disaster के answers I maybe write them down. तो by myself मैं थोड़ा current पढ़ लूंगा, थोड़ा एक दो pages disaster के पढ़ के जाऊंगा. But when I saw the previous year questions, I thought no, disaster के लिए भी it is also a subject जिसको I need to give equal respect as I gave to economics. So I just read disaster management in a very holistic manner, and I scored very good in even in GS. There was a question in my paper. It was that what are the differences between landslides of Himalayas and Western Ghats? And it was not because of my geography knowledge that I was able to answer this question holistically. It was because of my disaster management preparation that I gave a better answer to this question in GS1. I had prepared this for GS3, but it came in GS1 and I was able to answer it in very better manner. So no subject, no marks. You just don't take anything lightly. If you have disaster management somewhere mentioned in your syllabus, that means you have to read disaster management. If you have international relations somewhere in your syllabus, you have to read that. Even if there's a thing called as governance in GS paper 2. People think, okay, I would read polity Lakshmikant for means, and maybe that would suffice. No, when people go with Lakshmikant, they read Lakshmikant and then go to mains. They think out of 12 questions that are coming from polity or 8 questions, they are hardly able to answer one question correctly. Rest of the 7, they are just writing nonsense clutter. Why? Because they haven't analyzed the previous year questions, which again make us realize that the importance of current affair when it comes to GS2, be it international relations or polity. Polity mein fully the paper would come from, if not fully, 90 to 70% of the questions would come from current affairs. So for that, static is just a foundation. To answer those questions, you need to develop an understanding of the current issues also. That what is going on, if there's a bill, if there's an act, what would be the large scale impact of that act on Indian polity and the society as a whole. So these are some of the things that people need to go for in mains. That prelims mein ye cheezein agar nahi bhi karenge, still we could qualify prelims. But for mains, you need a holistic approach. Yeah, we were talking about GS paper 2. Now, how will students understand that? जो नए aspirants हैं हमारे, how will they understand कि Lakshmikant कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, you cannot escape from that, Lakshmikant is important, but how will they apply that part in governance? That is important. Second thing, in the current affair, they are reading about the international relations. Let's take an example. अभी इसराइल फलस्तीन के बारे में चल रहा है. इंडिया स्टैंड ऑन इसराइल क्या है, इंडिया स्टैंड ऑन फलस्तीन क्या है, और इसके जेनेसिस कहाँ पे है. So वो सब चीजें ड्रा करने के लिए जो यंग एस्पिरेंट्स नए हैं, how should they start looking into those questions? वो उनको कैसे अंडरस्टैंड करें? Right, sir. Right. It's a good question.
Sir, when you go to Lakshmikant, so then you see the mains paper. You see, okay, so no question has been directly asked from Lakshmikant. If not, if there would be any question asked from Lakshmikant, hardly it would be 2-3 questions. Yeah, one question from out of 20 in GS2. But you would be people would spend around 20 to 30% of their whole time that they are preparing for mains reading Lakshmikant. So where the problem lies is Lakshmikant is basically to understand what polity is all about, to understand the structure of polity. It doesn't cover the current part of polity. For example, I can tell you there was Article 370. Maybe there can be a chapter in Lakshmikant that would discuss about Article 370. But does Lakshmikant also discuss about the proceedings that are going on in the Supreme Court? No, because that is not an updated book. That is currently going on. Now there are two people. One who has only read Lakshmikant only reflect the static portion of Article 370. But there's the other person who has read the current affairs also. His answer would reflect the dynamic portion of Article 370. So if there is an examiner, who would he give more marks to? The one who has only answered the one side of the question, or the one who has answered the realistic side, that what is going on with the topic right now? Obviously the one who has touched the realistic side, the second one. So this is where the people lack. So in every answer of yours, if you see the questions, usually from 2018 batch, 2021, 2022 means when you see JKPSC papers I'm talking about, mostly questions are asked from current affairs. If not directly from current affairs, they would be somehow related to current affairs. For example, sir, you talked about international relations. You talked about international relations. If you see in the previous two mains papers of JKPSC, Russia-Ukraine war and its impact on India, these questions have been asked. So a candidate who doesn't prepare this, who just sticks to Lakshmikant for GS2, he is a fool if he doesn't cover these topics, because the syllabus clearly mentions that international relations means whatever is going on internationally. For example, for this means Israel-Palestine war and how it impacts India and what should be India's strategy. There's a policy. देखिए स्टैटिक कहाँ पे काम आता है, जैसे there's international relations. आपको एक वर्ड समझ आएगा, मे बी मुझे बीटेक के टाइम पे ये वर्ड पता नहीं होती, ये टर्म पता नहीं होती कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डी-हाइफेनेटेड पॉलिसी दैट इंडिया फॉलोज. तो वो उसके लिए मुझे स्टैटिक पढ़ना पड़ा इंटरनेशनल रिलेशंस का. सेम गोज ऑन विद लक्ष्मीकांत. मे बी मुझे ये समझ नहीं आता कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फर्क क्या है. वो लक्ष्मीकांत पढ़ के मुझे समझ आया, लेकिन करंट अफेयर में कहीं पे ये आजकल डिस्कशन हो रहा है मे बी कि इंडिया मूव फ्रॉम प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो ये आपको करंट अफेयर पढ़ के ही पता चलेगा कि व्हाई इज दिस डिस्कशन गोइंग ऑन. लक्ष्मीकांत या स्टैटिक पढ़ के आपको बस ये समझ आती है कि जो करंट में चल रहा है वो हो क्या रहा है. If you haven't read the static, you won't be able to understand the current affairs well. जैसे इकोनॉमिक्स की बात की जाए, अगर आपने स्टैटिक नहीं पढ़ा है या बेसिक इकोनॉमी नहीं पढ़ी है, मैक्रो इकोनॉमी, आपको तो न्यूज ही समझ नहीं आएगी कि व्हाट्स गोइंग ऑन इंटरनेशनली. So these are the things that I just want to emphasize this thing. जिसने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया होता है, around 50 to 60% of those students, उनको स्टैटिक पोर्शन पे थोड़ा ठीक ठाक ही एक होल्ड होता है. They are able to understand स्टैटिक पोर्शन. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? They just try to memorize that. They just try to memorize the static portion. They think that exam में question आएगा कि write down the powers and functions of president. No. यहाँ पे previous year papers जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, because you have to understand that ये क्वेश्चन ना प्रीलिम्स में आ सकता था कि which among the following is true about the powers of president. तो वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये वाली पढ़ाई. लेकिन मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आप हमें ये बताओ कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है और इंडियन प्रेसिडेंट है, इनके पावर्स को आप डिफरेंशिएट करो, या ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वहां पे. सो यू हैव टू नो व्हाट इज कमिंग ऑन. जैसे आपने कहा कि एक वॉर पे आप जा रहे हो, यू हैव टू नो दैट वहां पे क्या चीजें हो सकती है. यू कैन नॉट गो मेरे पास एक पर्टिकुलर चीज है, मैं ये लेके जाऊंगा तो सब कुछ सफाइस हो जाएगा. नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल. एंड अगेन आई वुड वांट टू टेल, आपके चैनल के थ्रू आई वुड वांट टू टेल स्टूडेंट्स जिनने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है या हूसोएवर इज हैज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, कि पहले से ही एक सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सेग्रीगेट करते रहो सब्जेक्ट्स को. जैसे आई वुड टेल, अगर इफ यू वुड आस्क मी कि GS2 में सर आप कैसे पढ़ते थे, आई वुड से सर देयर इज पॉलिटी, देयर इज गवर्नेंस, there is IR, and there is social justice. So there are these 4 subjects.
और मेरे लिए चारों इंपॉर्टेंट थे। जब मेरा GS2 का पेपर था, जब मैं GS1 का पेपर दे के आया, तो मेरे माइंड में बराबर था कि क्या मुझे सोशल जस्टिस पता है। अब इफ समबडी वुड आस्क मी सोशल जस्टिस में क्या, आई हैड 30 40 50 टॉपिक्स जो भी रेलेवेंट है, जो करंट अफेयर्स में थे या स्टैटिक में थे, आई हैड दोस टॉपिक्स इन माइंड कि इसके बारे में अगर क्वेश्चन आया, वुड आई बी एबल टू आंसर दैट। अगर इसके बारे में क्वेश्चन आया, वुड आई बी एबल टू आंसर दैट। सिमिलरली इन द केस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जो भी करंट अफेयर्स में मे बी 20 30 40 50 टॉपिक्स बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक्स थे, या स्टैटिक में जो बेसिक चीजें जो हमेशा, जैसे इस वक्त तो इजराइल पैलेस्टीन वॉर शुरू हुआ है, लेकिन जिस साल ये वॉर नहीं भी होता है, उस टाइम पे भी हम इजराइल पैलेस्टीन को पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इश्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया में। जैसे इंडिया और यूएस की रिलेशन, इंडिया और चाइना, और इंडिया की और पाकिस्तान की रिलेशन, इवन दो हमारे बीच में वॉर नहीं भी है, कुछ भी नहीं, मे बी इस वक्त काम है सब कुछ, लेकिन स्टिल ये रिलेशंस आपको पढ़नी है। दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एज द स्टैटिक पोर्शन ऑफ आईआर। द करंट पोर्शन ऑफ आईआर इज इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में कुछ हो रहा है, मे बी दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ करंट पोर्शन। तो ये डिफरेंशिएशन बच्चे को अपने दिमाग में लाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें GS2 में मेनी ऑफ द पीपल दे आस्क मी दिस क्वेश्चन, सर पढ़ें क्या, सर मेंस के लिए क्या पढ़ें। सो क्या पढ़ें इज, आप इफ यू वांट टू रीड समथिंग, आप फॉर एग्जांपल देयर इज विजन मंथली मैगजीन, वो आती है, आप उसमें आईआर एक टॉपिक आता है, सेकंड चैप्टर उसमें आईआर होता है, आप उसमें वो पढ़ लें कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंडिया इजराइल, बिटवीन इंडिया कनाडा, बिटवीन इंडिया यूएस। तो आपको डेफिनेटली मेंस में वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यू वुड बी नोइंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दैट क्वेश्चन। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांट टू आस्क फॉर GS2। करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GS2। Okay, so we'll go quickly to GS3 में आपने you have already talked in GS3 like economy वाला part, ecology वाला part, disaster management वाला part. So as such economy का syllabus जो हम पेपर पे देख रहे हैं, it looks very big. वो लंबा है as compared to disaster management की तो सिर्फ एक या दो लाइन लिखी है, ecology की भी एक ही लाइन लिखी है. But you said one very beautiful thing that we have to give equal emphasis on every aspect. तो कोई भी चीज वहाँ पे छोटा बड़ा नहीं है. तो क्विकली आप मुझे ये बताएं कि GS3 के लिए क्या रहेगा उनके लिए, देन वी विल गो टू द ethics part which is very important. So GS3 basically has 5 subjects in it. We have economy, we have science and tech, we have disaster management, we have internal security, and we have environment. So GS3 में what we think is, many of the people I have seen, they tell GS3 में है ना economy और science and tech, तो internal security, disaster और science environment वो कहाँ चले गए, या मे बी दे थिंक तीन चीजों पे हम फोकस देंगे, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट और इकोनॉमी। इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट से आपके एटलीस्ट 50 to 60 मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 250। और उसका फायदा क्या है, दोस 50 to 60 मार्क्स यू कैन स्कोर 30 और 40 आउट ऑफ दोस 50 60 मार्क्स। तो यू कैन नॉट लीव दोस थिंग्स, एंड दैट इज अ बिग स्कोर। हर पेपर में अगर आप 10 10 20 20 नंबर ही किसी तरह ज्यादा ला रहे हो बाकियों से, तो अल्टीमेटली यू बिकम अ टॉपर। दैट इज द पॉइंट दैट आई एम टेलिंग यू, ठीक है ना। तो इकोनॉमी में भी क्या हो जाता है बच्चों का, मेनी ऑफ द पीपल दे आस्क मी दिस क्वेश्चन कि सर इकोनॉमी में पढ़ें तो पढ़ें क्या। ये प्रीलिम्स में भी होता है और मेंस में भी होता है। तो मेंस में भी अगेन इकोनॉमी में पहले आपको स्टैटिक पता होना चाहिए कि मतलब एक इंसान को ये पता ही नहीं है कि बीओपी से फर्क क्या पड़ रहा है इंडिया की इकोनॉमी पे, या इंडिया का फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होता जा रहा है, तो उसको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि इससे क्या फर्क पड़ रहा है इंडियन इकोनॉमी पे, ही इज नॉट एबल टू रिलेट। तो दैट मींस उसको ये समझना चाहिए कि उसके स्टैटिक पोर्शन में ही अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। तो अब और उसको स्टैटिक मतलब उसको समझ आ रहा है कि व्हाट आई एम टेलिंग, या उसको पढ़ने के बाद ये चीजें समझ आ रही है, उसके बाद उसको वहां पे रुकना नहीं होता है, वो प्रीलिम्स तक है। मेंस में उसको कहां पे जाना है, मेंस में उसको ये देखना है कि कैन आई बी एबल टू राइट ए फुल आंसर 2 पेजेस ऑन दिस थिंग, कि इफ समबडी टेल्स मी कि इंडिया का जो फिस्कल डिसिप्लिन है, डू यू थिंक दिस इज गोइंग गुड और इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो ही शुड बी एबल टू रिलेट दैट करंट अफेयर की ओके FRBM रूल्स लिख दूं मैं यहाँ पे, मुझे पता हो कि वट एवर आई हैव रेड आई कैन राइट इट डाउन और लॉजिकल मैनर में। ही कैन रिलेट दैट फिस्कल डिसिप्लिन विद मॉनेटरी पॉलिसी, ही कैन रिलेट दैट फिस्कल डिसिप्लिन इन्फ्लेशन, ही कैन रिलेट दैट फिस्कल डिसिप्लिन इवन विद GDP ऑफ इंडिया, तो इवन विद PPP। तो दीज आर द थिंग्स दैट ही शुड बी एबल टू डू। फिर आपको मेंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कोई बच्चा है, उसने ये इकोनॉमी का थ्योरी पढ़ ली है, बट उसको यही नहीं पता है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है, बिल्कुल। तो व्हाट वुड ही डू। तो these are the things, ये current affair is very very important again in economics. If he knows that, he knows the building blocks of Indian economy, the current budget, the economic survey, what is going on in India, तो that is very important। ठीक है ना। साइंस एंड टेक में तो करंट अफेयर डज
the whole game, ठीक है ना. Internal security is also very, very important because there's a thing जैसे drugs का issue है, drug menace है, जो current affair में भी आते हैं, तो वो internal security में those questions would definitely be asked. Terrorism के issues, तो these are the things जो GS3 में बहुत important है. So now we'll come to the ethics portion. A lot of aspirants say कि इसमें जो हमारा strategy रहना चाहिए E2 O2 रहना चाहिए. Your essay, your ethics and your optional 2 papers are within your limit. तो आप उनमें कम मेहनत करो लेकिन प्रोडक्टिविटी ज्यादा बनेगा, स्कोर भी ज्यादा लाओगे. तो ethics के लिए आपका what was your strategy? ethics के लिए केस स्टडीज के लिए आपने क्या किया था, प्लस जो वहाँ पे स्टैटिक पोर्शन है, जो डेफिनेशन वाला पार्ट है, लाइक एटीट्यूड हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, प्रोबिटी हो गया, गवर्नेंस में जो बाकी चीजें इसमें दी गई है, यानी फिलोसफर दिया गया है, उसके लिए आपका अप्रोच क्या है? सर बेसिकली अगेन इन एथिक्स आई वुड से इसमें भी सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट रही मेरे लिए. मैंने आउट ऑफ 250 मार्क्स मैंने पहले डिवाइड कर लिया अपने पेपर को कि 120 मार्क्स ओके दीज वुड कम फ्रॉम केस स्टडीज एंड 130 मार्क्स दीज वुड कम फ्रॉम थ्योरेटिकल पोर्शन. फिर मैंने व्हाट क्वेश्चन केम इन माय माइंड इज थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए मुझे क्या पढ़ना है. सो मैंने सिलेबस देखा और मैंने वहां पे देखा कि देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टर्म्स जो ऐसे एज ए लेमैन हमें समझ नहीं आता है. जैसे आई कैन गिव एग्जांपल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी. एज ए पर्सन जिसने बीटेक किया था, मे बी आई वुड राइट समथिंग ऑन इट, लेकिन दैट वॉन्ट बी द एग्जैक्ट आंसर. इस एग्जाम में आपसे एक एग्जैक्ट आंसर चाहिए. आपको फुल्ली अंडरस्टूड हो गया होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स कि व्हाट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स. मतलब if you just imagine you want to become a civil servant but you don't even know what is honesty and integrity. You are not able to differentiate between the examples of honesty and integrity and you are telling that I want to become an honest civil servant. These are the cases. So theoretical part cases need to devise this strategy कि whatever you have gone through in your life, जैसे from the very childhood days of yours, जो भी आपको याद आता है एक real life example, you can even write those examples in your theoretical answers also. मेरे पेपर में I still remember I had this GS4 पेपर, एक क्वेश्चन आया था ईगो पे कि ईगो क्या होता है, और कुछ I don't exactly remember the question but it was something related to ego. तो I used some real life examples in that question. तो मुझे उस टाइम पे लगा मे बी इट वुड गो गुड और बैड, बट मेरे को लग रहा है कि उसमें अच्छे मार्क्स आए होंगे बिकॉज किसी ने सिर्फ ईगो को मे बी डिफाइन किया होगा. मैंने उसमें साथ में एग्जांपल दे दी कि दिस इज ईगो. देयर वाज एन एग्जांपल, एक पॉजिटिव ईगो, एक नेगेटिव ईगो. ईगो कैन बी पॉजिटिव, ईगो कैन बी नेगेटिव. तो दीज आर द थिंग्स जो आपको, एथिक्स इज बेसिकली द रियल, ठीक है ना. तो थ्योरेटिकल पार्ट में आपको एक बार थ्योरी पढ़नी जरूरी है सो दैट यू आर एबल टू राइट ए गुड डेफिनेशन ऑफ ईगो. फॉर एग्जांपल समबडी वुड टेल कि मुझे बताओ कि एथिक्स क्या होता है. We would say okay it is something अच्छा करना, morals. But when you read the theoretical part you would be able to define ethics, what ethics basically means. It is summum bonum, the ultimate good. तो वो वाली terms, technical terms वो आप सीखोगे when you read the theoretical part of ethics. फिर रही बात case studies की. Case studies में I again think answer writing is very important, और the best part to do answer writing for case studies is to devise a strategy. कौन सी strategy? आपको segregate करना है केसेस को. segregate क्या? अगर जो क्वेश्चन है आपको ये पता होनी चाहिए कि what are the options available to me, और आपको हर ऑप्शन में एक फ्लो चार्ट या एक डिवीजन देनी है बीच में कि if this is the option, और इस अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा उसकी वजह से. तो what that is how I answered my case studies questions कि अगर मैं ये वाला ऑप्शन लूंगा कि मैं ये चीज करता हूं एज अ डीसी इस केस में, तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे. उत्तर पे मैं लिखता था पॉजिटिव्स और उसके नीचे लिखता था नेगेटिव्स. और तीनों केसेस में फिर मैं लिखता था लास्ट में कि आउट ऑफ दीज 3 केसेस जिसके मैंने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स लिखे, मुझे केस 3 लगता है कि मैं इसके तहत जाऊंगा क्योंकि इसके पॉजिटिव्स इसके नेगेटिव्स से ज्यादा है. So that differentiation comes only when you have read the theoretical part of ethics. Otherwise आपको समझ ही, मैं एक क्वेश्चन के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स एथिक ईगो के बेसिस पे भी निकाल देता था, मैं लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी के बेसिस पे निकाल देता था. सो वो आपको तब पता होगा कि जब आप when you know different things. तो मतलब देयर वर क्वेश्चंस जिनमें मैंने ऐसे भी लिखा होगा मे बी कि दिस बेसिकली एक्ट ऑफ स्टीलिंग वर्सेस एक्ट ऑफ ऑनेस्टी और एक्ट ऑफ सेविंग लाइफ, दैट इज हाइंस डिलेमा. आई यूज दोस एग्जांपल्स वेरी वेल इन माय एग्जाम. सो उससे इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, हाउ मच ऑफ एग्जांपल्स एंड हाउ करेक्ट दोस एग्जांपल्स शुड बी. इट्स नॉट दैट यू राइट इररिलेवेंट कंटेंट just to keep this thing in mind कि okay examples maximum use करनी है. Examples that to the relevant ones जो कि examiner को लगे कि these are basically answering the what has been asked in question.
सो वो चीज डेवलप होती है आंसर राइटिंग से और गुड कंटेंट से, एंड एग्जैक्टली द कंटेंट दैट इज डिफाइंड इन सिलेबस यू हैव टू रीड दैट. Okay, that's wonderful. So, from last two case examinations in 2018 and 2021, a lot of people have literally given up on public administration. Yes, So, sir. people felt नहीं ये तो अब anthropology वाला सर्विस ही रह गया. Yes. You secured rank 5. You gave light or hope to a lot of aspirants again, जो पबेट के साथ कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि इसको छोड़ना चाहिए, अब मार्क्स नहीं मिल रहे. तो पबेट के बारे में we will discuss in detail कि what were your sources, what were the other things you followed. If you want to share some screen also with you, like if you have some book list or something, then it will be much better also. Otherwise you can just say, we can just put it later also. It's better that I would send you the PDF of books and references. Sure, we can later. Yeah, we can put in the description. Yes. Yes, as you have already said, when I also chose my optional, so people told me, are you mad? You are going for public administration. This is not a good optional when it comes to the scores. It is a good optional, but when it comes to the scores, जो देखा गया है, it is a bad option. So this perception was there. I know this thing. And many of the people told me, आपका तो बीटेक किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में, तो जस्ट गो फॉर एंथ्रोपोलॉजी, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, कोई बैकग्राउंड तो है नहीं किसी एक में. लेकिन when I started choosing my optional, मैंने public administration का ऐसा देखा कि at least this is related somewhere to administration, because अगर आप paper 2 में देखेंगे, there is a chapter that is district collector. So what I was trying to become was also a district collector. So I thought कि at least इसमें कुछ तो है इस एग्जाम के related. Anthropology is all about एक टेस्ट है आपके ग्रेजुएशन का. This has something related to exam as well. So I thought नहीं, this is good. I would study this. I am interested in these things. Administration, मुझे एक structure भी पता चल जाएगा exam का. Now there is one more thing कि अब मैंने tackle कैसे किया. तो optional का मुझे लगता है खास तौर पे public administration का the beauty lies in the theoretical part. If you have understood the theoretical part very well, the thinkers very well. अब very well का क्या मतलब है? One thing was there till 2018. क्वेश्चन आता कि साइमन जो है उसकी थ्योरी लिख दो. व्हाट इज द थ्योरी ऑफ साइमन, व्हाट साइमन स्टेटेड. तो हमें याद करना था और वहां पे बेटर मैनर में प्रेजेंट करना था. आज क्वेश्चन ऐसे आता है कि साइमन कैसे रेलेवेंट था कोविड के टाइम पे. नोबडी वुड आस्क यू व्हाट साइमन टोल्ड. नो, वो आपको मतलब एग्जामिनर थी तो वो पता है, बिकॉज ही हैज हिज ऑप्शनल एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ही वुड नो साइमन हैज सेड. So they are not going to ask you what Simon's theory is. They would ask you how he is relevant in today's era, and you have to write down 2 pages of that. So मेरे notes जो मैंने बनाए, I was trying my best कि मैं अगर कहीं पे relevance लिख रहा हूँ, मैं उसमें current life से सोचूं, if not मैं वहां पे लिखूं. लेकिन मैं examples हमेशा सोचता था जब भी मैं अपनी reading करता था कि अगर मुझे साइमन पे आएगा कि आजकल प्रैक्टिकली साइमन को मैं डीसी ऑफिस में कैसे यूज कर सकता हूँ, एक डीसी प्रोग्राम डिसीजन को नॉन प्रोग्राम डिसीजन उन चीजों में कैसे यूज करता है, कैसे, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन दोस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. तो टेलर में भी मैंने वैसे किया. आउट ऑफ एवरी 13-14 थिंकर्स जितने भी है मैंने वो किया. फिर जब मैं जैसे ही थिंकर्स खत्म किए, सबसे पहले मैंने थ्रू डिफरेंट सोर्सेज और अंडरस्टैंड किया उनको इन वेरी गुड मैनर. उसके बाद मैंने जब बाकी चैप्टर्स पढ़े, जैसे देयर इज अ चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो फिर जो भी चैप्टर्स आगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आते गए, जैसे देयर इज एन चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजट या कुछ, मैं हर एक थिंकर वो वाला देखता था जिसने बजट पे बात की थी और ये थिंकर कैसे यहाँ पे रेलेवेंट है इस चैप्टर में. तो दैट वाज माय मेन स्ट्रेटजी. मैंने पेपर 1 को पेपर 2 में यूज कर दिया. अब आई डिडंट, और मैंने एट द सेम टाइम ये ध्यान रखा था कि एग्जामिनर को ये नहीं लगना चाहिए कि ये जबरदस्ती थिंकर के नाम लिख रहा है पेपर 2 में. वेर एवर इट वॉज, जहां पे लगा मेरे को कि आई एम एबल टू फ्रेम द आंसर इन दैट मैनर कि ये लगे ही ना कि ये जबरदस्ती डाला गया है थिंकर यहाँ पे. इन दैट मैनर आई यूज पेपर 1 थिंकर्स इन पेपर 2 ऑल्सो. और ट्रस्ट मी, those thinkers are very much applicable to paper 2 of public administration, because public administration as a subject, if somebody is here जो pubad वाला देख रहा है मुझे, he would be knowing this thing. This subject basically wants one thing, and that one thing is 3 E's, that is efficiency, economy and effectiveness. जो चीज आपको अपनी पढ़ाई में भी लानी है, आपको एज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर वो वहां फील्ड में भी लानी है. और हर कोई थिंकर, अगर आप समझे हो, अगर आपने साइमन पढ़ा, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि
साइमन, हाउ वुड साइमन ब्रिंग इकोनॉमी, इसकी थ्योरी इकोनॉमी कैसे लाती है, मतलब पैसा कैसे बचाएगी सरकार का, इतने ही पॉसिबल मनी में आप ज्यादा काम कैसे करोगे, इफेक्टिवनेस कैसे लाएगी इसकी थ्योरी, और एफिशिएंसी कैसे लाएगी इसकी थ्योरी। अगर आपको ये समझ आ गया कि इसकी थ्योरी में ये फलाना पॉइंट एफिशिएंसी ला रहा है, ये फलाना पॉइंट इफेक्टिवनेस ला रहा है, ये फलाना पॉइंट इकोनॉमी में यूज हो सकता है, तो आप इसको सच में एडमिनिस्ट्रेशन में यूज कर सकते हो, और आप अपने आंसर्स को बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हो और बहुत होलसम बना सकते हो। So these are some of the things that are very important for public administration. So जो भी PubAd पढ़ रहा है, for those people, I just want to say कि read the thinkers part very well, और बाकी को उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो with the help of examples और through some logical and relevant content. ना कि क्लटर नहीं लिखना है, क्लटर को कट करना है और relevant चीजें, शॉर्ट चीजें, समराइज चीजें लिखनी है. So that is some of the. Again, if we see 2022 public administration paper 2, on the Yes, face sir. it looks कि ये तो बिल्कुल जीएस वाला पेपर बनेगा, राइट? एक क्वेश्चन को Yes. 2 3 दिन बाद दिया गया है, तो हाउ डिड यू कूप अप विद दैट कि नहीं ये तो जीएस वाला क्वेश्चन ना दिखे, मुझे इसमें कंटेंट बेहतर लाना है, और प्लस कंटेंट जो इम्प्रूव है उसके लिए आपने क्या किया इन द लास्ट एग्जाम से इस वाले एग्जाम तक, जो वो प्रोसेस है वो आपने कैसे हैंडल किया? सर बेसिकली जैसे आपने कहा, when there was this paper 2 of public administration in front of me, there were some questions जैसे कि governance पे questions, पंचायती राज questions. So it was more of a GS paper 2 rather than public administration paper 2. So first thing that came in my mind was that this paper, इसको कुछ टैकल अगर करना है तो I need something different in my answers. Otherwise I won't be scoring good. I would score marks 100, 80, 90, बस that's it. I won't be scoring those marks जो बाकी ऑप्शनल में भी 130, 140 टच कर लेंगे पेपर 2 में, and I would be there at 90. So जैसे पंचायती राज पे कोई क्वेश्चन आया या समथिंग, I again am telling you this thing, एक तो एग्जांपल्स मैंने उसमें लाने की कोशिश की, और गवर्नमेंट ने क्या किया है एग्जैक्टली पंचायती राज में, जैसे there would be some schemes, I created some table और उसमें मैंने वो लिखा, और साथ में आई यूज दिस थिंग कि कौन सा थिंकर यहाँ पे रेलेवेंट है। फॉर एग्जांपल फ्रेडरिक्स, उसकी थ्योरी अगर हम ये पर्टिकुलर चीज सरकार कर रही है पंचायती राज को लेके, तो आपको कैसे इस वाली सोसाइटी में एक डिफ्रैक्टेड वो वाला कॉन्सेप्ट, इफ देयर इज समबडी ऑफ PubAd, आई यूज दोस थिंग्स इन दैट. सो मे बी दैट इज व्हाट वर्कड आउट फॉर मी in paper 2 to differentiate some of my answers. It's not that I didn't answer the content of the question what has been asked, but at the same time एक छोटा सा पार्ट मैंने हर क्वेश्चन में वो रखा which was relating it to my public administration study, and that too in a very holistic. You touched a very important point कि your answer should be different from others' answer is how you were in a position are able to do that thing, which is very important. कि कहीं ना कहीं जब पंचायत राज का क्वेश्चन आया, एस्पिरेंट लाइक मी जब तब थे, हमें लगा कि ये तो अच्छा क्वेश्चन है, हमने पॉलिटी में ऑलरेडी पढ़ा है, वी कैन जस्ट राइट दो पंचायती वाला पार्ट, अमेंडमेंट लिखेंगे, उसके बाद क्या क्या हुआ, बट यू वर इन अ पोजिशन टू डू इट एंड ऑल्सो रिलेट इट विद द थिंकर. तो वो थिंकिंग प्रोसेस है, वो आप कैसे आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपने आप में लाया कि कोई भी चीज पेपर 2 में आएगा मैं उसको ए के साथ रेफर करूंगा? सर वो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, कभी कभी मैं व्हेन आई स्टार्टेड दिस प्रोसेस मैं इलॉजिकली भी अटैच करने लगा था थिंकर्स को विद सम डायनेमिक पोर्शंस और स्टैटिक पोर्शंस, लेकिन वो फिर मेरे को विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये अंडरस्टैंडिंग आ गई कि कहाँ पे और कैसे स्मार्टली टैकल करना है एक थिंकर को किसी पर्टिकुलर टॉपिक के साथ. सो दैट इज वन ऑफ द केसेस. जैसे आपने थिंकर पढ़ा होगा, आप बोल रहे हो कि आपको कैसे वो थॉट प्रोसेस आया, दूसरे को नहीं आया. जैसे आपने बेबी फ्रेडरिक्स पढ़ा होगा, व्हाट वी डू इज हम एक आइसोलेटेड माइंडसेट में रहते हैं कि मैंने फ्रेडरिक्स पढ़ा तो डिफ्रैक्टेड प्रिज्मेटिक मॉडल पढ़ा. जब ये डायरेक्टली पूछा जाएगा व्हेन क्वेश्चन आस्क्ड डिफ्रैक्टेड प्रिज्मेटिक मॉडल या फ्रेडरिक्स का जिक्र हो, ओनली देन मैं ये वाली इंफॉर्मेशन अपने दिमाग से निकालूंगा, अदरवाइज दिस इज ऑफ नो यूज टू मी इन मेंस. लेकिन व्हेन यू सी मेंस, अगेन आई एम टेलिंग दिस थिंग, इट इज अ 360 डिग्री अप्रोच. इवन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आई यूज सम ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ GS3. Some of the things from Hindu newspaper मैंने PubAd में डाल दिए. I used some boxes to highlight those, some hard facts. वो भी not over of like I didn't put over facts. I put just facts जो required थे, which were relevant in that particular question. जैसे पंचायती राज में there were some facts related to some elections of पंचायती राज या issues related to पंचायती राज. I used those issues rather than writing a full-fledged sentence of 5 lines, a para of 5 lines. I used examples, what are the issues realistic manner में.
So these are some of the things, the maximum portions you touch in your answer, the maximum dynamic portions you touch in your answer, that makes your answer very, very attractive. So sir, those are the things. और जिस टाइम पे आप थिंकर पढ़ना स्टार्ट करते हो, आप एट द सेम टाइम उसको सोचो कि फ्रेडरिक्स जो है, इसको मैं किस किस करंट GS2 के पॉलिटी के किस किस टॉपिक के साथ जोड़ सकता हूँ. इफ यू आर नॉट एबल टू रिलेट फ्रेडरिक्स एट होम विद द GS2 टॉपिक्स, दैट मीन्स आपने फ्रेडरिक्स को उस तरह से समझा ही नहीं है. If you are not able to relate Simon with the GS2 topics, या आपको लगता है कि साइमन का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, तो मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ, दैट मीन्स असल में आपको पता नहीं है, आप जबरदस्ती नहीं कर रहे हो, आपको वो जोड़ना नहीं आ रहा है एक पर्टिकुलर चीज के साथ in the best possible manner. So this is what students need to work upon in public administration, and I think अगर वो चीज हम कर लेंगे, we would definitely score good marks in public administration also. That's very important. Like a lot of aspirants are now again hoping that public administration should score good, and one of the important things is that we somewhere don't understand syllabus properly. We don't understand the thinkers properly. Maybe sometimes we try to just cover the syllabus for the sake of covering it. अपनी satisfaction के लिए हमने ये cover किया, and we just go with multiple sources. In public administration, we have n number of sources available, and that too readily available. Maybe somewhere we do this mistake कि उस अब मोहित भट्टाचार्य अभी पढ़ना है, रमेश भी पढ़ना है, अब हमें गोयल भी पढ़ना है, अरोरा भी पढ़ना है, अब हमें अरिबम का बुक भी पढ़ना है, अभी उस कोचिंग सेंटर के नोट्स आए वो भी पढ़ना है उनका, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मे बी द एसेंस जो है बेसिक चीजों का वो खो जाता है. बिल्कुल सर, बिल्कुल. या तो व्हाट विल यू एडवाइस कि शॉर्ट में जो अभी मेंस एग्जाम आएगा फेब में, उनके पास अभी शायद 2.5 मंथ है, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, उनको पब्लिक को वो कैसे टैकल करे टू हैव अ गुड स्कोर, एटलीस्ट 280 290 के बीच में वो स्कोर कर पाए. सर जैसे आपने बोला, सबसे पहले तो मैं उनको बोलूंगा कि आपको इट्स नॉट दैट आप कंटेंट वाइड मत रखो, लेकिन अब अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे आपने साइमन किसी पर्टिकुलर बुक से पढ़ा और आपने साइमन की रेलेवेंस भी पढ़ी, इंट्रोडक्शन भी पढ़ा, बेसिक फैक्ट्स पढ़ी, इसकी थ्योरी पढ़ ली, उसको थोड़ा बहुत रिलेट भी कर लिया एफिशिएंसी के साथ, इफेक्टिवनेस के साथ, पर्टिकुलर टॉपिक्स के साथ. GS2 पेपर में आप देखोगे कि साइमन, अगर GS2 का कोई क्वेश्चन है, इन 14 चैप्टर्स में, GS2 में देयर आर 14 चैप्टर्स, इन 14 चैप्टर्स में ये वाला थिंकर मैं कैसे यूज करूंगा, और इन 14 चैप्टर्स में कौन से टॉपिक है जहां मैं, अगर उस पे क्वेश्चन आया, मैं साइमन यूज करूंगा. इन 14 चैप्टर्स में कौन सा टॉपिक है, अगर उस पे क्वेश्चन आया, मैं वहां मैं टेलर यूज करूंगा. आप टेलर की थ्योरी के बाद एक प्लेन पेपर ले लें और उसमें लिखें कि टेलर किन किन टॉपिक्स में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस में मेंशन्ड है यूज हो सकता है, और दैट मीन्स अगर आप ये सोच पा रहे कि ये इन टॉपिक्स में यूज हो सकता है, आपने ये भी सोचा होगा कि कैसे यूज हो सकता है. बिल्कुल. तो ये चीज मैं अलग बोलना, बाकी एवरीबॉडी नोज, मैं अभी बोलूंगा कि ये सोर्स पढ़ो, वो सोर्स पढ़ो, इट्स नॉट पॉसिबल इन जस्ट 30 मिनट्स की मैं कितना बता पाऊंगा, बट दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एड, ये लोगों को करना चाहिए इस बार, कि आप जो भी थिंकर पढ़ रहे हो, आप अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस देखो कि इस वाले पेपर 2 का जैसे चैप्टर 1 है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, देयर इज मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन. क्या आपने कभी सोचा आप टेलर को यूज कर सकते हो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, कि इट हैड द एस्पेक्ट्स ऑफ टेलर आल्सो? You can write this thing in your answers. Yes, absolutely. But we don't think like that. That is what I was telling. So I thought like that. मैंने सोचा कि no, this is not idiotic. This is a good thing. But because other people were not doing this thing, let's try. Either there would be a failure or you would end in the top. So that is the thing. So we should do these things. So that is what I want to share with you people. That's why we have named this series at what it takes to be a topper. जो टॉपर है वो कहीं ना कहीं वो his or her the decision is different. जो उसको टॉपर बनाता है वो आउट ऑफ बॉक्स सोचता है कहीं ना कहीं, नहीं सब अगर टेलर को ऐसे लिख रहे हैं या सब अगर पंचायती राज को ऐसे लिख रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं 2-4 थिंकर उसको लगा के इसमें टू मेक इट मच बेटर, कि उसको भी लगे कि नहीं पेपर 1 भी इसको अंडरस्टैंड हुआ है, एंड ही नो दैट जर्नल पार्ट आल्सो, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, exactly. Moin Khan, thank you very much for talking to UPS Central Simplified. It was a wonderful conversation. Thank you. Thank you so much, sir. Thanks for this opportunity. Yeah, thank you.